Good morning, students. So today we have to start a new type of chemical reaction, that is endothermic and exothermic. हम इसे प्रोसेस भी बोल सकते हैं, that is endothermic and exothermic process. So एंडोथर्मिक का मीनिंग है यानी कि एब्सॉर्प्शंस, और एक्सोथर्मिक का मीनिंग जो है वो है मीन्स रिलीज ऑफ एनर्जी. पहले कॉम्बिनेशंस, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट पे एक एक वीडियो स्पेशल बनाए हैं. वो सभी वीडियो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, वो आपको पहले देखना पड़ेगा, बाद में ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा. पहले हमने देखा था वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में, बाद में डिकम्पोजिशंस के बारे में. आफ्टर दैट वन इज द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. दीज आर द मेन 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अभी हमें देखना है प्रोसेस, दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस. एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक के बाद उसी टाइम में जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के भी हम एग्जांपल देखेंगे. सबसे पहले हमें समझना चाहिए एंडोथर्मिक वर्ड. जो एंडोथर्मिक वर्ड है वो कहाँ से, यानी कि मोस्ट ऑफ द जो केमिकल रिएक्शंस है या फिर केमिस्ट्री की जो टर्म्स है उसमें ही पर्टिकुलर टर्म का नेम जो है, मीनिंग जो है वो छिपा हुआ है. जैसे कि एंडोथर्मिक. Endothermic means what? Endothermic is the one, that is meaning of the word endo means in. Endo means in. Endo means enter or in or enter. And next one is the therma. Therma means heat. Therma means heat. That is the endo means in or enter and थर्मा मीन्स हीट. इसका मीनिंग ऐसा है, जिस केमिकल रिएक्शंस में हीट इन्वॉल्व होती है या फिर एब्सॉर्ब होती है, इट इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक प्रोसेस और मे बी रिएक्शन. द पर्टिकुलरली प्रोसेस या फिर पर्टिकुलरली रिएक्शंस जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है, इन या फिर एंटर होती है, इसको बोलते हैं हम एंडोथर्मिक प्रोसेस और फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन. अनदर वन द एक्सोथर्मिक का जो मीनिंग है, एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स एग्जिस्ट यानी कि बाहर जाना, एग्जिस्ट रिलीज होना. और थर्मा मीन्स हीट. इसका मीनिंग होगा एक्सोथर्मिक यानी कि द केमिकल रिएक्शंस और प्रोसेस वेयर द हीट इज रिलीज, इट इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और मे बी प्रोसेस. एक्सो का मीनिंग है, एक्सो मीन्स रिलीज, out or release, and therma means heat. Therma means heat. Therma means heat. This is the main basic difference between the endothermic and exothermic. After that हमें देखना है processes, that is endothermic process and exothermic process, that is endothermic and एक्सोथर्मिक प्रोसेस. देखो बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक जनरली जो है प्रोसेस बिलोंग्स टू फिजिकल चेंज. प्रोसेस बिलोंग्स टू फिजिकल चेंज. इसका मीनिंग ये है कि पर्टिकुलरली जो प्रोसेस होगी इसमें जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा उसका इंटरचेंज हो सकता है, बराबर है, पर्टिकुलरली इंटरचेंज हो सकता है. हम पहले एंडोथर्मिक प्रोसेस के बारे में देखेंगे. एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस. द प्रोसेस इन विच हीट इज एब्सॉर्ब. द प्रोसेस in which heat is absorbed, is called endothermic process. The process in which heat is absorbed, it is called as endothermic process. फॉर एग्जाम्पल एंडोथर्मिक प्रोसेस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? अगर देखा जाए एंडोथर्मिक रिएक्शंस के, तो जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस,
then conversion of frost to water vapors, evaporation of water, forming a cation from the iron into a gas phase. These are all the examples of the endothermic process. एंडोथर्मिक प्रोसेस का फर्स्ट एग्जांपल अगर देखा जाए तो ये है मेल्टिंग ऑफ आइस, दैट इज द प्रोसेस. एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस. देन ice get water get converted into vapor, that is the evaporation process. Evaporation of water, it is also examples of the endothermic process. Next one, the formations of cation into a gaseous state, it is also a example of the endothermic phase or endothermic process, that is formations of ions into gas, of ions, that is cations or ions into gaseous state, into gas, it is also examples of endothermic process. So the process where or the process in which heat energy is absorbed, it is called as endothermic process. Another one is the exothermic process. So what is the meaning of exothermic process? So the process where or in which heat is released is called as exothermic process. So the process in which heat energy is released, heat energy release is called exothermic process. So एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर बोलते हैं तो एक्सोथर्मिक में क्या होगा, एक्सो मीन्स आउट. सो इसके एग्जांपल्स है जैसे कि मेकिंग ऑफ आइस क्यूब, दैट इज फ्रीजिंग प्रोसेस, देन फॉर्मेशंस ऑफ द स्नो इन क्लाउड्स, then condensations of the rain from the water vapors, candle flame, these are all examples of the exothermic processes. जैसे कि एक्सोथर्मिक का अभी जैसे एग्जांपल बताया, एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ आइस है, सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये अपोजिट रिएक्शंस है एंडोथर्मिक के मेल्टिंग ऑफ आइस से. सो फ्रीजिंग ऑफ वाटर, इट इज द what is the means freezing of water is the examples of endothermic process. Another one, formations of the raindrops, formations of raindrops from the water vapors, it is the nothing but the examples of exothermic process, that is formation of raindrops or maybe rain, formations of raindrops from water vapors, it is examples of the particular reaction, particular process. So these are examples of exothermic process. So all the students please take the screenshot of this particularly writing work. Next one, so हमें जब तक हमने ये देखा है एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक्सोथर्मिक प्रोसेस, सो इसमें हमने क्या क्या देखा है. एंडोथर्मिक बोले तो जहाँ पे हीट एब्सॉर्ब होती है, एक्सोथर्मिक बोले तो जहाँ पे हीट रिलीज होती है, सच टाइप ऑफ प्रोसेसेस. और प्रोसेस बोले तो क्या है, प्रोसेस मीन्स इंटर कन्वर्जन, फिजिकल चेंज, जैसे कि मीन्स प्रोसेस बोले तो इट इज रिलेटेड टू द फिजिकल चेंज, यानी कि ये मीन्स reactant get converted into products and products obviously get converted into reactant. So such particularly change is the physical change and process related to the physical change. So this is the endothermic and exothermic process. Next one हमें देखना है अभी endothermic reaction और exothermic reactions. Next देखना है हमें endothermic reaction and exothermic reaction. So endothermic and exothermic reaction. देखो बच्चों, पहले हमने जो देखा है वो है किससे रिलेटेड, प्रोसेस के बारे में, एंड प्रोसेस इज रिलेटेड टू द फिजिकल चेंज स्पेशली.
अब ये जो एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शंस है, ये जो रिलेटेड है वो है केमिकल चेंज से. सो व्हाट इज बाय केमिकल चेंज? So chemical change is nothing but the means reactant completely get converted into product and the product is not come reverse back into the reactant. So such process or such phenomena, it is the chemical change. So first one देखेंगे endothermic reactions. So endothermic reactions में क्या होगा? The chemical reactions where heat energy is absorbed, means the chemical reaction in which heat energy get absorbed from the surrounding. So it is called as endothermic reaction. So इसकी definition हम लिख सकते हैं, the chemical reaction or the chemical change, the chemical reaction where the chemical reactions where heat energy is absorbed or the chemical reactions in which heat energy is absorbed, then the reaction is said to be endothermic reactions. So in case of endothermic reactions में क्या होगा? heat energy जो है वो environment से absorb होगी. For example, calcium carbonate on strong heating, जैसे कि CaCO3, it is the formula for calcium carbonate. On strong heating, that is at about, when we heat it at about 1000 degrees Celsius या फिर 1273 Kelvin. So it get converted to calcium oxide solid state and carbon dioxide is in the gaseous state get released. So जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस means 0 डिग्री सेल्सियस का क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन और 1000 डिग्री सेल्सियस मीन्स 1000 डिग्री प्लस 273 केल्विन. सो इसका मीनिंग ये है 1273 केल्विन. सो हम 1000 डिग्री भी बोल सकते हैं या फिर 1273 केल्विन इस पे भी हिट कर सकते हैं, मीनिंग इज द सेम. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ द पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस जिसपे हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है. सो मैं इसे ऐसा भी लिख सकता हूँ, CaCO3 सॉलिड स्टेट प्लस हीट एनर्जी absorbed at about 1000 degrees Celsius. So heat energy is absorbed, so it get converted to calcium oxide plus carbon dioxide gas. So this is the one of the examples of the particular chemical reaction, that is endothermic reactions. उसके बाद सेकंड केमिकल रिएक्शन है बच्चों, वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होगा? जो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के अपोजिट है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जैसे कि द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी गेट रिलीज, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज गेट रिलीज, इट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द केमिकल रिएक्शंस इन विच heat energy release is called as exothermic reactions. अगर एग्जांपल देखा जाए, फॉर एग्जांपल लेते हैं CaO plus H2O, it get converted to CaO solid state, H2 is in the liquid state, get converted to CaOH by 2. इसका कन्वर्जन किस में होगा? CaOH by 2. CaOH by 2 ले तो calcium hydroxide and some amount of heat energy get released through the chemical reactions. So calcium solid state plus react with the H2O liquid state get converted to CaOH by 2 aqueous state and some amount of heat energy get released. Another one, next one activity, that is the, for example, Zn, zinc in solid state treated with CuSO4 solution, that is the blue color solutions, that is aqueous state, get converted to into ZnSO4 and Cu get displaces and some amount of heat energy also are released. So in this chemical reaction, though this reaction is displacement type of chemical reaction, but in this chemical reaction heat
energy get released, and such type of chemical reaction is called as the exothermic reaction. Such type of chemical reactions is called as exothermic reaction. So the chemical reaction in which heat energy is released is called exothermic reaction, and the chemical reaction in which heat energy is absorbed, such type of chemical reaction is called as the endothermic reaction. So पहले हमने जो डिफरेंस देखा था वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के बारे में देखा था. ये जो है पर्टिकुलर एग्जांपल, ये एग्जांपल्स है एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में. सो प्रोसेस बिलोंग्स टू फिजिकल चेंज, दैट इज इंटरकन्वर्टिबल ऑफ द मैटर टेक्स प्लेस. लेकिन केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन जो है इसमें इंटरकन्वर्टिबल कन्वर्जन वो नहीं होता है, मीन्स बाय यूजिंग एनी फिजिकल प्रोसेस. सो यहाँ पे रिएक्टेंट का कन्वर्जन अगर प्रोडक्ट में होता है, सो प्रोडक्ट डायरेक्टली इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट. सो सच प्रोसेस सच पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज कॉल्ड एज द केमिकल रिएक्शन. सो जिस केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी अब्सॉर्ब होगी वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और जिस केमिकल रिएक्शंस में हीट एनर्जी गेट रिलीज आउट इट इज कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस.